We are going to move towards the rigid body dynamics. Okay, now coming to chapter number 16, which is planar kinematics of a rigid body. सबसे पहले तो हम इस टॉपिक की ये जो चैप्टर का नाम है, सबसे पहले इसी को डिस्कस कर लेते हैं. इसमें एक वर्ड आया है प्लेनर. इससे क्या मुराद है? एनीवन वॉलंटियर जो डिफाइन कर सके व्हाट इज प्लेनर मींस हियर? along a plane. So the body is constrained to move within a plane, यानी स्पेस में 3D में नहीं हो रहा, मोशन सारे के सारा प्लेन में हो रहा है. सो पहली बात तो ये कि चैप्टर 16 जो है इट इज रेलिवेंट टू प्लेनर मोशन, यानी आपके पास जो रिजिड बॉडी होगी इट इज गोइंग टू मूव इन अ प्लेन ओनली रादर देन इन अ स्पेस. ओके, द सेकंड थिंग व्हिच वी नीड टू डिस्कस हियर इज काइनेमैटिक्स. व्हाट डज काइनेमैटिक्स मींस? आप पूरा चैप्टर पढ़ चुके हैं काइनेमैटिक्स का. जी, एनीवन वॉलंटियर जो कि काइनेमैटिक्स डिफाइन कर सके? So the study of motion without the study of forces that cause it. That's correct. So the study of motion without regard to the forces that are acting is basically termed as kinematics. Okay, the third thing is rigid body. How do you define a rigid body? सर जिसके पार्टिकल्स के दरमियान का डिस्टेंस आपस में चेंज नहीं होता जब एक फोर्स उस पे अप्लाई की जाए, यानी कि डिफॉर्म ना हो वो. Okay, so a rigid body is a body that is considered to be incapable of any deformation. So अगर हम इन तीनों चीजों को मिलाएं, planar kinematics of a rigid body, so this chapter will deal with the motion of a rigid body without taking into account the forces which are acting on that rigid body. In other words, we are going to simply relate the displacement, velocity and acceleration of a rigid body without regard to the forces that are actually acting on that rigid body, causing that rigid body to move. So the topics which we are going to cover in this chapter are flashed on the slide. That is, initially today we are going to cover these three topics, probably these three topics. The first one is what are the types of planar motion which a rigid body can undergo. Then we are going to discuss each and every motion one by one. First of all, we are going to discuss the definition, and then we are going to develop some mathematics. Then inshallah in next week onward we are going to cover probably the velocity analysis. In order to perform the velocity analysis, there are two different methods. One is the relative velocity method, using the relative velocity equation जो already आपने पढ़ी है. The other one is the instantaneous center method, which is a new thing to you. And then finally we are going to wrap up this chapter after maybe 2.5 weeks with this topic, which is the acceleration analysis of a rigid body. So probably this is going to be the last complete chapter जो कि हम अपने कोर्स में शामिल कर रहे होंगे, प्लेनर काइनेमेटिक्स ऑफ अ रिजिड बॉडी. जहां तक ताल्लुक काइनेटिक्स का है रिजिड बॉडी की, तो उसके हवाले से आपको थ्योरी में सारी बता दूंगा. अगर प्रोबेबली टाइम बचा तो हम उसके एक दो न्यूमेरिकल भी कर लेंगे, लेकिन एटलीस्ट पार्टिकल और रिजिड बॉडी की काइनेटिक्स में कहाँ डिफरेंस आ रहा है वो आपको जो है वो बता दिया जाएगा एट द एंड ऑफ दिस कोर्स, ताकि अगले किसी कोर्स में जब आपको रिजिड बॉडी की काइनेटिक्स की जरूरत पड़े तो एटलीस्ट वो चीज़ें आपके लिए नई ना हो, आपने वो समझी हुई हो.